Welcome to my channel, the Raizada Talk. So today I will be presenting this top 40 most frequently asked conceptual SQL interview question. So if you are appearing for any interview, apart from some practical question, they ask some conceptual question to test your knowledge, right? So those questions I have gathered in this PPT, and it will definitely help you and your upcoming interviews. And also I will provide the PDF version of this PPT in the description so you guys can download. The first one we have this the difference between drop, delete, and truncate command in SQL. Second, we have the difference between group by and where. Third is the SQL query or order execution. Okay. And sometimes they provide some query and ask you to explain the order in which it's executed. So I think आप लोगों को ये SQL query execution पता होना चाहिए if you are appearing for any interview because ये बहुत बार पूछे जाते हैं. Okay. Third, we have the what is the primary key and what is the difference between primary key, unique key, and foreign key. So these are some basic concepts that you must know before appearing in interview. Okay, so we have this the difference between rank, dense rank, and row number. Find average salary without using average function. And third, we have the remove duplicate without using row number in SQL. Okay. Sometimes they purposely ask you to remove duplicate using row number. इसमें क्या होगा that if they give some duplicate value and they ask you to remove duplicate without using row number. Okay. So prepare well. Now, they also ask you to explain different type of joins in SQL and provide each example for each joins. Okay. So we have this inner, left, right, full, self, and cross. These are the joins that we use in SQL. And also they ask to provide some real-time scenario. Okay. And we have this, these are some basic questions, but I think if you are appearing for any interview now, so you may know key, what is DDL, DML, DQL, DCL command, and what is the analytical function we use in SQL. Okay, the lead, lag, first value, last value, you know. Also, the index, like okay. Now we have the acid property in SQL. So acid property contain the atomicity, consistency, isolation, and durability. And the next we have the rewrite subquery using join. Okay. So sometimes what happens now, they give you some query which will a subquery and they ask you to rewrite this subquery using join. Okay. So prepare well on this topic. Now, now अब क्या होता है नेक्स्ट वी हैव दिस ज्वाइन कंडीशन जहाँ पे दे आस्क कि explain the real time scenario like where you use a self join, where you use a left join, and where you use a right join. Okay, so left join में like when we use self join कि if we have the uh, if we want to show the relation between employee and manager. Okay, तो एक ही टेबल दिया जाता है in which employee ID, name, and manager will be there, and in that case we use the self join. ठीक है. Now we have this left join. हम left join कब use करते हैं when we want to show the designation name or something, and in that we have the two table, the employee table and department table, और यहाँ पे we have the department ID in both table. Okay, on which we join the table. Basis on that we will show the designation detail of every employee. Now we have the right join, and if we want to show the total employee uh, in each department, so in that case we can use the right join as well. Like we can use a left join, but yeah, we can use the right join as well. Take care. Now apart from this some like questions now,
they sometimes give you this type of query, okay, and they ask you to see and tell ki if this query is correct or not. तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं दैट द ग्रुप वाइज रिटन एबव वेयर कंडीशन, ओके, तो इट विल जनरेट एरर, ठीक है। तो इफ द सीक्वल क्वेरी जनरेट एरर ना, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, तो ये कॉन्सेप्ट पूछते हैं, दिस कॉन्सेप्ट लाइज इन द सीक्वल ऑर्डर ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन। तो अगर आपको वो पता है तो यू कैन डेफिनेटली आंसर दिस, ओके। नाउ आपको अगर डिफरेंस बिटवीन यूनियन एंड यूनियन ऑल या यूनियन और यूनियन ऑल का कॉन्सेप्ट पता है तो यू कैन टेल दिस क्वेरी दैट सेलेक्ट प्रोडक्ट नंबर सेल्स फ्रॉम टेबल 1 एंड वी आर गेटिंग दिस डिटेल फ्रॉम टेबल 1 बट वी आर गेटिंग आईडी नंबर एंड सेल्स फ्रॉम टेबल 2। तो यहाँ पे ये क्वेरी एरर देगी, क्योंकि यूनियन एंड यूनियन ऑल का कंडीशन ये होता है, फोर्स कंडीशन, whatever the data that we are selecting from table 1, the same data we have to select from table 2 also, ठीक है। Now the third we have this, select employee name, employee salary, department ID from employee comma department। तो इसमें आई डोंट थिंक कि ये क्वेरी एरर देगा, बट आई थिंक ज्वाइन कंडीशन इज मिसिंग, तो मे बी एरर दे। और क्रॉस ज्वाइन में वी यूज द टेबल बोथ टेबल नेम विदाउट ज्वाइन कंडीशन, तो आप देख लीजिए। Now, this CT, recursive CT, and the constant, these kind of question, you can expect in intermediate or senior level. Yeah, if you are appearing, if you have like more than 4 years of experience now, then they ask a recursive CT, okay, in which they tell you ki, have you used the recursive CT? तो you have to give some scenario कि कहाँ पे हमने यूज किया है। Also the common table expression तो हम लोग यूज करते हैं, तो prepare well for this CT as well, okay। Now if sometimes क्या होता है that they ask you some scenario कि that your query is taking 30 seconds to execute, and how do you define that it is optimized, like whether it is taking 30 seconds or 1 minute or uh, like half an hour, okay, so how do you like define it is optimized, yeah? So this kind of question you expect in like सीनियर लेवल हो कि वहाँ पर हम हमारे साथ दैट ऑप्टिमाइजेशन लेवल पे डिस्कशन होती है, okay। So next we have this constant in SQL, so we have these kind of constant, and uh, the column level constant and table level constant, which constant can be defined only at column level। तो एक इंटरव्यू में मेरे मुझसे ये पूछा गया था, एंड आई वाज नॉट एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन एट दैट टाइम। तो यू गाइस कैन सर्च अबाउट इट कि ये कब हम डिफाइन करते हैं, लाइक कॉलम लेवल कांस्टेंट एंड टेबल लेवल कांस्टेंट क्या होते हैं, and, वो उसके बारे में आप पढ़ लीजिए, ठीक है। हाँ, वी हैव दिस डिफरेंट टाइप ऑफ सिनेरियो जहाँ पे दे आस्क अबाउट द डिफरेंस बिटवीन कैर varchar and varchar, है ना, क्या डिफरेंस होता है, बिकॉज वी डिफाइन लाइक एट द क्रिएशन ऑफ टेबल ना, वी डिफाइन कि फ्लैग वुड बी द कैर वन, है ना, एंड द नेम वुड बी द varchar 10, है ना। तो एट द टाइम दे आस्क की एंड varchar इस में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो यू गाइस कैन सी इफ वी डिफाइन एनी वेरिएबल एज श्याम एज कैर 10, तो विल इट गिव एरर। तो थोड़ा डिटेल लेवल पे, बेसिक लेवल पे जाके वो थोड़ा डिस्कशन करते हैं, to test your concepts, okay। Also the YOY और MOM percentage change कैसे हम निकालेंगे, so using analytical function we can like show the YOY or MOM details, you know। Also how to handle the is null condition, like how to handle the null condition, okay, or divide by zero error। So if you are having some error and null values now, so they ask you that question कि if we have this 10 by null, what will be the result, है ना। तो इस केस में रिजल्ट विल बी नल, क्योंकि हम नल को किससे डिवाइड और कंपेयर या कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। और तो उसके बाद वो पूछेंगे दैट हाउ डू यू लाइक हैंडल दिस केस, है ना। तो नल इफ एंड इज नल, इससे हम जाके उसको हैंडल करते हैं, ठीक है। नाउ वी हैव द
these type of question which you can expect for intermediate or CJ level role. The difference between CT subquery and temporary table, and the difference between subquery and correlated subquery. These questions थोड़ा सा सीनियर लेवल एंड इंटरमीडिएट लेवल पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि व्हाट इज द स्टोर प्रोसीजर, हैव यू एवर यूज्ड देम, what is the most function in SQL, most command in SQL, and uh, also the date function. If you are appearing for any interview ना, तो आपको डेट रिलेटेड जो भी फंक्शन यूज होते हैं, द ईयर, मंथ, डेट एट, डेट डेफ, है ना, ईयर, मंथ, डे, वीक डे, ये सारे आने ही चाहिए, ठीक है. And also we have this, how do we create only the structure of table if table is already created. तो एक सिनेरियो में उनसे उन्होंने मुझसे पूछा था कि टेबल इज ऑलरेडी क्रिएटेड, ठीक है, आपको बस स्ट्रक्चर बनाना है, not the data, ठीक है. In that we can use the select star into table, select star into command to create the table, है ना, select star into new table from old table where one not equal to one, ठीक है. तो ये एक सिनेरियो आया था, तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चंस को इसमें इंक्लूड किया है. तो यू गाइस कैन सर्च अबाउट दिस क्वेश्चन, ये आपके साथ भी आ सकता है, ठीक है. ओके. नाउ ये क्वेश्चंस थोड़े इंटरमीडिएट और सीनियर, मोस्टली सीनियर लेवल पूछे जाते हैं. दैट हैव यू एवर यूज व्यूज, लाइक इन SQL वी हैव व्यू, तो कैसे हम यूज करते हैं, आपने कितने टाइप के होता है, एंड क्यों हम बनाते हैं व्यूज को. तो व्यूज इज लाइक ए वर्चुअल टेबल जहाँ पे सिर्फ क्वेरी लिखी रहती है, एंड इट्स गेट डेटा फ्रॉम दैट फ्रॉम आवर लाइक बेस टेबल, ठीक है. और यहाँ पे हम वी हैव दिस इंसर्टेड एंड डिलीटेड मैट्रिक टेबल इन SQL सर्वर. तो उसको डिफाइन करने बोला जाता है. व्हाट इज कैन वी यूज अ DML स्टेटमेंट इनसाइड SP, और कैन वी यूज अ DML स्टेटमेंट इनसाइड फंक्शन. तो दिस काइंड ऑफ फंक्शन दे आस्क इन इंटरव्यू. तो आई थिंक होप दिस जितने भी क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए, इस पे आप प्रिपेयर कर लें, दैट यू मे find this question in your interview. ठीक है. थैंक यू.